Hello friends, I hope you all are doing well and also you are preparing for your maths examination which is going to be held on 10th of March. My name is Neha Gaur. I am here to give you a brief about chapter statistics which is there in your syllabus. This chapter consists of 6 to 7 marks questions in your mathematics exam. This is the most easiest chapter from your syllabus. But still, many of the students are facing problem in solving the questions of statistics. What is the main reason behind this? Let's start with statistics. It is the process of collecting, organizing, representing, analyzing, interpreting, and finding the conclusion of the data. What exactly statistics is all about? Statistics is all about understanding the patterns and trend. What are the patterns we have to follow? This is all about statistics. We all are actually following the process of statistics in our daily life. This we have to understand only. Okay. So, firstly, let's take an example. एक छोटा सा हम example लेते हैं how you are following the statistics in your daily life. For example, as you all are giving exams, so what we are doing as a teacher, we are collecting your information from there. What are the marks you are getting? What are the marks you are scoring in your exams? That is called as the first step of statistics, that is called as collection. Then after we'll move ahead towards organizing. Then after checking your papers, then we organize your data in the form of tabular form. That is called as organization of data. Then after we follow the next step, that is called as representing your data. Representing your data in the form of bar graphs, pictographs, histograms. There are so many ways. That is called as representation. We move ahead towards the next process, that is called as analyzing. Then after we analyze the data, which student has scored the highest marks, which student has scored the lower marks. Then after interpretation of data, then finding the conclusion, what is the reason behind why you have not scored good marks, why you have scored less marks. That is called as conclusion. In all on all these processes, one more thing is left, that is called as measures of central tendency. इस पूरे प्रोसेस में हमें एक चीज और फाइंड करनी होती है, दैट इज कॉल्ड एज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. इस पूरे चैप्टर में इन योर 10th स्टैंडर्ड आपको सिर्फ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ही निकालनी है. नाउ व्हाट इज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी? व्हाट इज सेंट्रल टेंडेंसी? सेंट्रल टेंडेंसी इज all about finding the average of the data. Data का average find करना is called as central tendency. And what is the meaning of measures? Measures means तरीके. What are the ways to find the measures of central tendencies? These are the ways to find the measures of central tendency. One is mean, the second one is median, and the third one is mode. Now, before finding the measures of central tendency, firstly we should know कि what are the types of data. हमारे पास हम let me take you towards your 6th, 7th and 8th class, जहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा होगा types of data. There are 3 types of data. बच्चे सिर्फ यहीं पर ही confuse होते हैं. Many of the times I have noticed बच्चे मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि मैम हम लोगों ने measures of central tendency में तो पहले हमने वो वाले formulas किए थे, but why we are doing the other formulas? बेटा formulas are same, सब कुछ same है, बस हमें data का ध्यान रखना है. What kind of data we are following? In your 6th and 7th standard, 6th, 7th, 8th standard, you have learned about individual data, discrete data. Now in 10th standard, we are going to work on this group data. इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट डेटा हमने ऑलरेडी कर चुके हैं और ऐसा नहीं है कि अगर हम कर चुके हैं तो वो इस बार नहीं आएगा, ये सब कुछ दोबारा आएगा. ठीक है, सो यू हैव टू वर्क ऑन इंडिविजुअल एज वेल एज डिस्क्रीट डेटा ऑल्सो. नाउ मीन, measures of central tendency, the first is mean. Mean in case of individual data. Now what is individual data? Individual data होता क्या है? Individual data, suppose if I am taking an example of the students, like I have to check the weight of the class, weight of the students of the class. ठीक है, if I'll take the class 7th standard student, उनका वेट स्टार्ट होता है 30 kgs, 35 kgs, 38 kgs, 40 kgs, 45 kgs. अब अगर मैं इंडिविजुअली हर बच्चे का डेटा इस तरह से कलेक्ट कर रही हूँ जिसका सबका है, सपोज 30 kgs हो गया, 35 है,
40 kgs, 45 kgs, 54 kgs, इस तरह से हर बच्चे का मैंने डेटा कलेक्ट किया. दिस काइंड ऑफ डेटा इज कॉल्ड एज इंडिविजुअल डेटा. नाउ व्हाट इज डिस्क्रीट डेटा? अब डिस्क्रीट डेटा क्या होता है? अब अगर मैं ये बोलूं कि 30 kg वेट क्लास में सपोज 5 स्टूडेंट्स हैं, उनका 30 kg वेट है, दिस इज कॉल्ड एज वेट, दिस इज वेट एंड दिस इज द फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी मीन्स कितने बच्चों का 30 kg वेट है. तो दिस काइंड ऑफ डेटा इज कॉल्ड एज डिस्क्रीट डेटा. सपोज 35 kg वेट जो है क्लास में 4 बच्चों का है, 40 kg वेट जो है वो 3 स्टूडेंट्स का है. सो दिस काइंड ऑफ डेटा इज कॉल्ड एज डिस्क्रीट डेटा. Now, what is the difference in the formula in both the datas? Now, for this, till your 5th standard, आप इसमें mean कैसे find करते थे? Sum of observations divided by number of observations. The same thing we have to follow for the individual data, but formula हमारा थोड़ा सा हम इसमें symbols use करेंगे. This is the symbol to calculate the mean, that is summation x upon n. Now this is the symbol to calculate mean. Here this is called as sum and this is called as, x is called as the observations and n is called as number of observations. This is the formula to calculate mean in case of individual series. For example, let's take sum of observations. Here the observations are 30, 35, 40, 45. इन सब का sum करेंगे. We'll do 30, 35, 40, 45 plus 54 divided by how many observations are there? 1, 2, 3, 4, 5. After adding, we'll divide it. We'll get the answer. This is called as mean in case of individual series. Now, how we can find the mean in case of discrete series? This is the data, the weight of the students and the frequencies of the students. The formula to calculate mean in case of discrete series is summation xi into fi upon summation fi. So summation means it is called as sum, xi are the observations and fi is called as the frequency, and this fi summation fi. Now how we can find? So firstly we'll multiply the observations with the frequency. We'll get fi into xi, that is 30 into 5, it is 150. So when we multiply 35 with 4, we'll get 140 and 4 3s are 12, it is 120, and the sum of fi into xi is, so the sum of the frequencies and the observations is 410 and the sum of the frequencies is 12. Now you have to just substitute the values in the formula, that is 410 divided by 12, that is around 34 point something you will get. So this is the formula to calculate the discrete to calculate the mean in case of discrete series. Now let's move towards mean in case of group data. So अब ये नहीं किसी ने समझना कि हमारा इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज आप 8th 9th तक पढ़ के आ चुके हो तो इट विल नॉट कम इन योर एग्जाम्स. ऐसा नहीं है. मे बी इट कम्स इन 1 mark or 2 marker questions. But now let's move the main question that will come in your exam from the mean in case of group data. So there are 3 methods to calculate mean in case of group data, that is direct method, assumed mean method and step deviation method. Many of the students were saying कि मैम step deviation is not in your exams. So बेटा step deviation ऐसा कुछ नहीं है कि ये एग्जाम में है या नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है. This is, सबको लगता है कि this is the most difficult method, but this is not the difficult method. Let's see how this is not a difficult method. So firstly, direct method. Direct method क्या है? It is the simplest method, mean, that is जो आप अभी तक कर रहे थे in case of discrete series. The same method is that is summation xi into fi upon summation fi. The same method you have done in discrete series. Next method is assumed mean. इसमें क्या करना है?
अज्यूम मीन्स इसमें हम एक assumption ले लेते हैं एक नंबर की, दैट इज a. So formula will be summation xi into di upon summation fi. Now ये di क्या है, ये a क्या है? आई थिंक सबको xi पता है, फ्रीक्वेंसी पता है ना. व्हाट इज di एंड a, वो हम लोग अभी करेंगे. नाउ स्टेप डेविएशन मेथड सेम, मीन बस इसमें जिस तरह से आपका डायरेक्ट मेथड में a हमने ऐड कर दिया, इसमें आपका a प्लस समेशन xi इन प्लेस ऑफ di इट विल बी ui अपॉन समेशन fi इनटू h हो जाएगा. बस हर स्टेप में, हर मेथड में एक एक स्टेप आपका इंक्रीज हो जाएगा. सो अब एग्जाम में आपसे बोला जाता, इफ इट इज पर्टिकुलरली आस्क्ड इन द एग्जाम दैट यू हैव टू अप्लाई दैट मेथड, इनमें से जो भी पर्टिकुलरली मेथड बोला जाएगा वो आपको अगर बोला गया है, देन यू हैव टू अप्लाई पर्टिकुलरली दैट मेथड. अदरवाइज यू कैन अप्लाई एनी ऑफ द थ्री मेथड्स. इन तीनों में से कोई भी मेथड आप लोग अप्लाई कर सकते हो, अगर स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है तो. अगर मेंशन है और आपने एज्यूम मीन मेंशन है, आपने डायरेक्ट अप्लाई कर दिया, तो वहां आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे. So here is the question. It is the question, collected the data of number of plants from 20 houses. ठीक है, here you have to find the mean of this data. Now the data, as you can see, आपको differentiate करना है कि आपको formula कौन सा apply करना है. As you can see here the data is group data. Group data किसको बोलते हैं? जहाँ पर grouping है. इधर देखो आपको यहाँ पर group में लिखा हुआ है 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, ये आपका group data है. और इस group data को इस These are the houses 0 to 2, मतलब आपका क्वेश्चन है collected the data of number of plants from 20 houses. ये आपके houses हैं, 20 houses में से plants का कलेक्शन किया गया, किस हाउस में कितने प्लांट्स हैं. सो 0 से लेकर 2 प्लांट्स कितने घरों में है? सिर्फ एक घर ऐसा है जो भी उन्होंने डेटा कलेक्ट किया था, सर्वे किया था, उसमें से सिर्फ एक घर ऐसा है जिसमें लोगों के पास या तो प्लांट्स हैं ही नहीं या ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही प्लांट्स हैं. 2 घर ऐसे हैं जहां पर आपका 2 से 4 प्लांट्स हैं. इस तरह से ही आपका डेटा है. नाउ यू हैव टू फाइंड द मीन. आई विल अप्लाई ऑल द 3 मेथड्स ओनली इन दिस क्वेश्चन. ठीक है, यू विल कम टू नो. नाउ आपको पता है, लेट्स चेक. पहले हम डायरेक्ट मेथड चेक करते हैं. इसका फॉर्मूला था मीन इज इक्वल्स टू समेशन xi इंटू fi अपॉन समेशन fi. आप जो भी मेथड अप्लाई कर रहे हो, पहले आप वो मेथड लिख लो, उसमें क्या क्या वैल्यूज आपको चाहिए, उन मेथड, उस वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है. नाउ fi यहाँ पर दिख रहा है, these houses are called as the frequencies. ठीक है, fi है हमारे पास. नाउ व्हाट इज xi? xi अब यहाँ पर क्या है? व्हाट इज xi? डिस्क्रीट और इंडिविजुअल डेटा में डायरेक्टली जो वैल्यूज दी हुई थी, वो ऑब्जर्वेशंस जिनको कहते थे, वो आपका xi था. नाउ व्हाट इज xi हियर? यहाँ पर तो आपके पास ग्रुप डेटा है, तो इधर xi क्या होगा? xi इज कॉल्ड एज द क्लास मार्क्स. xi को हम बोलते हैं क्लास मार्क्स. नाउ व्हाट आर क्लास मार्क्स? बेटा क्लास मार्क्स जो है, क्लास मार्क्स का आपका हो सकता है 1 मार्कर में आपका क्वेश्चन आ जाए, फाइंड आउट द क्लास मार्क्स ऑफ this particular data. So how we can find the class marks? Class marks is equals to lower limit plus upper limit divided by 2. हर क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 is called as the class mark. Now if we see the class interval of this class, so here the lower limit is 0 and the upper limit is 2. So when we add 0 plus 2 divided by 2, we'll get 1. 2 plus 4, it is 6. 6 divided by 2 is 3. 4 plus 6 is 10, divided by 2 is 5. 6 plus 8, 14, divided by 2 is 7. 8 plus 10, 18, divided by 2 is 9. 10 plus 12 divided by 2 is 11, and here we'll get 13. So these are called as the class marks. Class marks is also called as xi. Now it's very simple. Just multiply it, xi and fi. We'll get 1 ones are 1, 3 2s are 6, 5 ones are 5, 7 5s are 35, 9 6s are 54, 11 2s are 22, 13 3s are 39. Just sum it all, summation xi into fi,
So the sum of the product of frequencies and the class marks is 162. Now we know the sum of this and also the sum of the frequency. Just substitute the values. It is 162 divided by 20. The result will be 8.1. So this is the mean this is the mean from direct method. This is direct method. Now we have to find the mean with the help of assumed mean method. Now what is assumed mean? Now the next method is assumed mean method. In assumed mean method, the formula to calculate mean is A plus summation Fi into Di upon summation Fi. So now in this, what is A? A, I already told you, it is the assumed value. assumed value है, इसको अब कहाँ से assume करना है? हमें कोई भी value को assume कर लेना है from your class marks. इसमें से आप किसी भी value को assume कर लेते हो, लेकिन हम क्या करते हैं basically will take the middle value. Basically हम middle value को लेते हैं. अब इसमें से क्या करना है? How we can find? इधर से हमारे पास आएगा di. इधर से आएगा हमारे पास di. Now di is the xi minus a. Di, to calculate how we can find di? Di is called as xi minus a. Xi is your class marks. इसमें से हम assumed value को minus करते जाएंगे. It is 1 minus 6. xi minus a है, not a minus xi. अगर a minus xi कर दिया तो यहाँ पर marks cut हो जाएंगे. So it is xi minus a. 1 minus 7 is minus 6. 3 minus 7 is minus 4. 5 minus 7, it is minus 2. 7 minus 7 is 0. 9 minus, now it is 9 minus 7. It is plus 2. It is plus 4. It is plus 6. So now in the formula it is summation fi into di, not summation fi into xi. Now xi का काम खत्म हो चुका है. We have to just multiply summation fi, sorry summation नहीं, it is fi into di. So fi is 1. 1 into minus 6 is minus 6. 2 into minus 4, it is minus 8. 2 minus 2 into 1 is minus 2. 5 into 0 is 0. 6 2s are 12. 4 2s are 8 and 6 3s are 18. Now just summation fi into di, इनका add करेंगे, sum up. So the sum of fi into di is 22. Just substitute the values in the formula. It is a. What is a here? A is that the value you have assumed, that is 7. 7 plus summation fi into di is 22. Divided by summation fi is 20. The values are in front of you. Just substitute the values in the formula. You'll get the answer. It is 1 point something 1. So as you can see, 7 plus 1 is 8.1. So as you can see, the value from assumed mean is also 8.1 and the value from direct method it is also 8.1. So what is the difference between direct method and assumed mean method? So बेटा difference there is no such kind of difference. बस ये है कि आपके लिए step बढ़ जाएगा, वो आप लोग सोचते हो कि मैम step increase हो गया है, but इससे as you can see यहाँ पर जब हमने ये values को multiply करने के बाद जब आपने add किया और जब आप इसको solve करोगे वहाँ पर calculation problem आ जाती है, वहाँ पर calculation में आपको issue आता है. और यहाँ पर देखो एक step extra करने से आपकी यहाँ पर calculation कितनी कम हो गई. Calculation easy हो जाती है, बच्चों को problem आती है calculation करने में, addition subtraction फिर division करना, उसमें time भी बहुत ज़्यादा consume होता है. बस एक step बढ़ाने से आपकी calculation easy हो जाती है. ऐसा ही आपका same step division में भी है. Step division is the third method. उसमें सिर्फ आपका एक स्टेप इंक्रीज होगा और उससे आपकी कैलकुलेशन इससे भी ज्यादा इजी हो जाएगी. ओके,
सो बेटा ये तो आपका था नॉर्मल मीन, जब आपका बिल्कुल डायरेक्टली वैल्यूज गिवन होती है। एक आपका क्वेश्चन फॉर्म होता है जिसमें आपका मीन दिया होता है, मीन, और यू हैव टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी फ्रॉम द डेटा। आपको फ्रीक्वेंसी को फाइंड करना होता है। इट इज ऑल्सो वेरी सिंपल फॉर्मूला, आपको वही अप्लाई करना है, बस यू हैव टू टेक केयर कि हाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ द फ्रीक्वेंसीज। द फॉर्मूला इज अगेन सेम, it is mean is equals to summation xi into fi upon summation fi. Yes, how we can find the class marks? It is again the same process, sum of lower limit and upper limit divided by 2. So it is 11 plus 13 is 24, divided by 2 is 12. 13 plus 15, it is 28, divided by 2 is 14. It is 16, 18, 20, 22 and 24. Now xi into fi, it is 12 3s are 36. As you can see students, यहाँ पर देखो, अब आप अगर डायरेक्ट मेथड अप्लाई करते हो तो यहाँ पर हमारे पास कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी हो जाती है। सो इट इज़ वेरी मच ईजी टू अप्लाई assumed mean method. It is 20, हाँ, it is 20f. अब इसको हम कैसे करेंगे? 20 into f is 20f. So the sum of all these observations is 704 except this. Now इसको हमने क्या करना है? ऐड करना है। कैसे ऐड करेंगे? It is 20f. Directly 20f लिखेंगे. Now substitute the values in the formula. It is summation xi into fi. It is this 704 plus 20f divided by sum of frequencies is 40 plus f, and the mean of the distribution is already given. It is 20. This thing is already given in the question. It is 18 is equals to. Now it's simply transpose the values. 18 into 40 plus f is equals to 704 plus 20f. Again transpose it. पहले तो multiply करेंगे. 18 4s are 18 into 40. It is 18 into 40 is 720 plus 18 into f is 18f is equals to 704 plus 20f. Now you can transpose all the values, constant on one side and variables on other side. So it is 720 minus 704 is equals to 20f minus 18f. 720 minus 104 is 16 is equals to, and 20f minus 18f is 2f. Just again transpose it. 2 is in multiplication form with f. So when you divide it, I hope transposing सबको आती होगी. 2 8, it is 8. So the value of f is 8. So this kind of question also comes in your exam. ये 2 मार्कर में आपका ये क्वेश्चन आ सकता है, इस तरह का क्वेश्चन जहां पर आपको फ्रीक्वेंसी को फाइंड करना पड़ेगा. Okay, now the second measure of central tendency is mode. Mode in case of individual series. In 6th 7th standard आपने किया होगा. Mode जो है, mode is called mode is called as the value which has the highest frequency. So mode in case of individual data, here you can see the value which has highest frequency जो सबसे ज़्यादा बार repeat हुई है. That is here 2 2. 4 4 4. As you can see, 4 is repeated itself 3 times. So that means the mode of this series is 4. So this is the mode in case of individual series. Now how we can find the mode in case of discrete series? इसमें भी discrete series में क्या हो जाता है, आपके पास frequency आ जाती है, और frequency में भी ये देखेंगे कौन सी फ्रीक्वेंसी. अब इसमें से आपकी देखो यहाँ पर सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है, किस वैल्यू की सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है. इट इज 6. मतलब जो 8 नंबर है, 8 जो है, इट इज रिपीटेड 6 टाइम्स. बाकी और नंबर्स हैं, ये 3 टाइम्स है, ये 4 टाइम्स है, ये आपका 2 टाइम्स है, ये वाला नंबर. सो हियर द मोड इज योर 8. दिस इज द केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज दैट यू हैव डन टिल 8th स्टैंडर्ड. नाउ मोड इन केस ऑफ ग्रुप सीरीज. So this is the formula to calculate mode in case of group series.
Z is called as, Z is called as the symbol of mode. So here the formula is L plus F1 minus F0 upon 2 F1 minus F0 minus F2 into H. Here L is called as the lower limit of model class. Firstly we have to find the model class of the data. Then after F1 is called as the frequency of the model class. जो model class हम find out करेंगे उसकी frequency को model F1 कहते हैं. F0 is called as the frequency of the preceding class. Preceding class मतलब जो model class है उससे ऊपर वाली class is called as preceding class, and F2 is called as the frequency succeeding the model class. उसके नीचे वाली, उसके आगे वाली frequency को F2 बोलते हैं. And H is called as the class size. Class size कैसे find करते हैं? Let's check. So here is the question from the method mode, from the measure of central tendency mode. For this, the form, let's firstly write down the formula, that is L plus F1 minus F0 upon 2 F1 minus F0 minus F2 into H. So firstly let's check out, are these values are there in the question. So here firstly we need L. L is called as the lower limit of the model class. So firstly we have to find the model class. So how we can find the model class? As I have already told you in the discrete method, discrete series, कि मोड क्या होगा आपका जब फ्रीक्वेंसी दी होती है, तो जो आपकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली क्लास होगी that is called as the model class. So here you can check the highest frequency is 104. So highest frequency is 104. So here its model class is 50 to 60. This is called as the model class. So model class is 50 to 60. So here L will be, the L is called as the lower limit. So lower limit of the model class is 50. Now let's check out F1. F1 is called as the frequency of the model class. So this is the frequency of the model class. Now next, L is called as the lower limit of the model class. F1 is called as the frequency of the model class, that is 104. Now F0 is called as the preceding value of the model class. आपकी frequency आपकी preceding one. And F2 is called the succeeding model class, that is 98. Now the last value that we have to find is called as H. H is called as the class size. अब class size हम कैसे find करते हैं? Class size is called as the difference of the class intervals. So here the differences of all the class intervals is same, that is 10. So all the values are here. So substitute all these values in the formula, you will get the answer. So here L is 50 plus F1 is 104 minus 78 upon 2 into F1 is 104 minus F0 is 78 minus F2 is 98 multiplied by 10. Just solve it, you'll get the answer. So here it is 50 plus 104 minus 78 is 26. 104 into 2 is 200. 8 minus 78 minus 98 into 10. 50 plus 26 upon 32 into 10, it is 50 plus 260 upon 32. It is 50 plus 260 divided by 32 is around approximately 8.1. So when you add it, you will get 58.1. So this is the mode of this whole data. I hope it is clear to all. So now let's move towards
our next measure of central tendency, that is median. So now again, median in case of individual series, discrete series as well as group data. So ये सारा मैं आपको ब्रशअप दे रही हूँ फ्रॉम आपके 6 to 10th। 6 से आपने जो भी आपने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा हुआ है वो मैंने आपको एक बार थोड़ा सा ब्रीफ करा दिया है। अगेन मीडियन इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। नाउ इसमें भी थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि मीडियन के लिए भी हमारे पास दो तरह का डेटा होता है। एक होता है आपका even series and the other one is odd series. So odd series means यहाँ पर बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। ऑड का मतलब वो समझते हैं द वैल्यूज विच आर गिवन इन द ऑब्जर्वेशन आर ऑल ऑड। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑड का मतलब क्या होता है, वॉट एवर द ऑब्जर्वेशंस आर गिवन in the question, वो number of observations should be odd. Like if I say 2, 3, 4, 7, 9. As you can see here, two even numbers are also there and also odd. But you cannot say the whole series is even or odd. इसमें confusion नहीं होना। आपको you just have to count all the numbers 1, 2, 3, 4, 5. These are the 5 values. अब ये 5 values मतलब ये series आपकी odd है, number is odd, that's why the series is also odd. For this formula is very simple. This is M is called as the symbol of median. The formula to calculate it is size of n plus 1 upon 2th observation इधर मुझसे बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि क्या मैम इट इज इंपॉर्टेंट टू राइट साइज ऑफ n plus 1 upon 2। येस इट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज जो भी अभी हमारे पास वैल्यू आएगी वो दैट इज नॉट एग्जैक्टली द मीन। यहाँ मीडियन, सॉरी मीडियन, वो मीडियन नहीं होगा। बच्चे यहाँ पर बहुत गलती करते हैं। साइज ऑफ n plus 1 upon 2th, n is called as the number of observations. Here the number of observations are 5. 5 are the, so 5 plus 1 upon 2th observation. So again, size of 5 plus 1 is 6 upon 2th observation. It is size of 3rd observation. अभी हमारे पास ये exactly median नहीं आया है। This is called as the size of 3rd observation. This is called as the position. अब इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, हमारे पास जो भी सीरीज मीडियन के लिए दी हुई है उसको हमें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। फर्स्टली वी हैव टू अरेंज आवर डेटा इन असेंडिंग और एज वेल और डिसेंडिंग ऑर्डर। सो माय डेटा इज ऑलरेडी इन असेंडिंग ऑर्डर। सो व्हाट इज द वैल्यू एट 3rd पोजीशन? यहाँ पर 3rd पोजीशन पे व्हाट इज द वैल्यू? इट इज 4. So 4 is called as the median of this data. So अब हमें यहाँ पर साइज नहीं लिखना, जो लास्ट में आंसर आएगा that is called as the median, which is 4. This is the formula to calculate median in case of odd series. So now next is median in case of even series. So इधर डेटा ले लेते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7. Here as you can see 1, 2, 3, 4, 5, 6 observations are there. So this is the case of even series. इस even series में formula will be size of n upon 2th observation plus n upon 2 plus 1th observation divided by 2. So this is the formula to calculate median in case of even series. Again follow the same process. Size of n is again the number of observations. It is 1, 2, 3, 4, 5, 6. Firstly we have to arrange the data in ascending or descending order. Okay, so n is called as number of observation. It is 6 upon 2th observation plus 6 upon 2 plus 1th observation.
यहाँ पर बच्चे मिस्टेक करते हैं कि वो पहले इसमें ऐड कर देते हैं देन आफ्टर उसको डिवाइड करते हैं, बट हियर व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्टली वी हैव टू डिवाइड द वैल्यू, देन आफ्टर वी हैव टू ऐड. सो ये आप ऑलरेडी करके आ चुके हो, ये दिस इज द ब्रीफ अप. सो इट इज साइज ऑफ 6/2 is third observation plus 6/2 plus 1, it is 6/2 is third plus 1, it is fourth observation divided by 2. यहाँ भी बच्चे बहुत गलती करते हैं, वो क्या करते हैं 3 plus 4 divided by 2, it is 7/2, 3.5 is the answer, but this is not the answer. आपका आंसर कैसे निकलेगा, this is the पोजीशन, ये आपको पोजीशन आई है, आपकी पोजीशन आई है, पोजीशन की वैल्यू क्या है, व्हाट इज एट थर्ड पोजीशन, थर्ड पोजीशन पे आपका क्या है, इट इज 4, एंड व्हाट इज एट द फोर्थ पोजीशन, इट इज 5. अब ये जो भी इनकी पोजीशंस हैं वो उधर वो ऑब्जर्वेशंस आर कॉल्ड एज द वैल्यूज. यहाँ पर अब हम फिल करेंगे, इट इज साइज ऑफ थर्ड ऑब्जर्वेशन वाज 4 and 5. So it is 4 plus 5 upon 2. 4 plus 5 is 9/2. So 9/2 is called as 4.5. So as you can see, इन दोनों का मीडियन मिडल वैल्यू विल बी ऑब्वियसली 4 और 5 की मिडल वैल्यू विल बी 4.5. सो ये आपका था मीडियन इन केस ऑफ individual data. So now median in case of group data. Group और discrete series का आपका फॉर्मूला यही रहेगा. discrete में आपके पास individual और जो observations हैं उनके साथ उनके frequencies होंगी, उन frequencies formula will be the same. So मैं directly इस पे group पे ही आ गई हूँ. The formula will be median is equals to L plus N/2 minus CF upon F. So again L is called as the lower limit of the median class. So firstly we have to find the median class. CF is called as the cumulative frequency of the, it is called as the cumulative frequency, sorry इसमें कुछ ये लिखा, it is called as the cumulative frequencies, and F is called as the frequency of the median class, and H is called as the class size, and N is called the total number of observations. So here ये जो cumulative frequency आपको लेनी है, this cumulative frequency will be taken as the cumulative frequency of cumulative frequency of preceding the median class. ये वाला ना आप दोबारा ही बना देना पूरा मीडियन वाला, इसको इरेज करके. So median in case of group data, median in case of group data means median in case of group data as well as discrete data is same. discrete में बस आपके पास observations होंगी, individual observations, उसके साथ उसकी frequency होगी, और group data में आपके पास group में values होंगी. Now median in case of group data is formula is L plus N/2 minus CF upon F. CF is called as the cumulative frequency and F is the frequency. So L is lower limit of the median class, CF is called as the cumulative frequency of preceding class, preceding value of the median class, preceding value of the median class. F is called as the frequency of the median class, H is called as the class size, and N is the total number of observations. Now let's start the question. So this is the question of median in case of group data. So firstly we'll write the formula. Here it is, median is equals to L plus N/2 minus CF upon F into H. Now let's check out the values. L is called as lower limit of the median class. So firstly we have to find the median class. So median class कैसे find करते हैं? It is N/2. So N is called as the sum of the observation frequencies. So it is 50/2, that is 25. अब ये 25 आपको कहीं दिख रहा है? कहीं पर भी नहीं है. So
लेट्स चेक आउट इस 25 से हम मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं. सो उसके लिए मीडियन में सबसे पहले तो वी हैव टू फाइंड आउट द CF. CF इज कॉल्ड एज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. क्यूमुलेटिव मतलब इन सबको एक एक करके ऐड करते जाएंगे, विल गेट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. सो फर्स्टली जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में फर्स्ट वैल्यू विल बी द सेम, देन आफ्टर विल ऐड द अदर वन. 2 + 12 दैट इज 14. 14 + 22 इज it is 36. So 36 + 8 is equals to 44, and 44 + 6 is called as 50. तो यहाँ से आप चेक भी कर सकते हो क्या आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सही है या नहीं. लाइक सी द लास्ट जो फ्रीक्वेंसी होगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दैट विल बी द सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज. तो यहाँ से पता चल जाएगा दैट आवर आंसर विल बी इज करेक्ट. So this is called as cumulative frequency. अब यहाँ से हमारे पास मीडियन क्लास आएगी. As ये हमारे पास this is the formula to find out the median class. 25 चेक करते हैं. क्या इस डेटा में आपके पास cumulative frequency में कहीं पर भी 25 है? नहीं, it is not there. So what we do, जो भी हमारे पास 25 जैसे कि 25 के बाद वाली जो भी हमारे पास वैल्यू होगी that will be the cumulative, that will be the उसका जो क्लास इंटरवल होगा दैट विल बी द मीडियन क्लास ऑफ द डेटा. सो 36 के सामने वाली क्लास इंटरवल है 20 to 30, दैट इज द मीडियन क्लास. सो L, so here L will be 20, that is the lower limit, and n upon 2 we know 25. CF. Now CF क्या पता? CF is called as a cumulative frequency of the median class की preceding वाली class. So this will be the cumulative frequency. This is the cumulative frequency. So CF is called as 14. F is the frequency of the median class, that is 22, and H is again the class size, that is 10. सभी का क्लास इंटरवल्स का क्लास साइज आपका सेम है, that's why it is 10. Now substitute the values. So M is equals to 20 plus n upon 22 is 25. CF is 14 upon frequency is 22 into H is 10. 20 plus 25 minus 14 is 11 upon 22 into 10. So solve it. 11 tens are, आप इसको यहाँ पर भी सिंप्लीफाई कर सकते हो. 11 ones are 11, 11 twos are 22, 1 tens are, it is 10 upon 2. Simplify it. 25 are 20 plus 5 is 25. So this is called as the median in case of group data. So these kinds of questions will come in your exam along with this kind. आप मीडियन में सेम वही जैसे हमने मीन में किया था फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करने वाले उस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं एग्जाम में. आपके पास ये क्वेश्चंस हो सकता है 4 मार्कर में, केस स्टडी में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं. सो यू हैव टू प्रैक्टिस ऑल दोज क्वेश्चंस लाइक दिस. And if you're having any kind of problem after watching this video, you can write in the comment section. I'll definitely revert you back. Thank you everyone.